Good evening, everyone. Just doing the rain check. Am I audible? Just wait for 15-20 seconds if everyone can hear me. Please reply on chat. Okay, cool. So we are good to go now. So everyone, welcome to this session on DILR sectional strategy for CAT 2020. So first thing first, what should be your preparation plan till 29th of October? We are 26th 9 p.m. So you have around 60 hours. Okay, if or to be precise, 59 hours for people who have first slot. So for the next 2 days, the plan should be that uh, ideally, I would say you should not solve any DILR set. Okay, don't solve, okay, because thing is whatever you already know is already there in your mind. Okay, it's not gonna change, and whatever you don't know, if you try to learn, that will create unnecessary pressure, and most probably you will not be able to solve the similar type of question even if you get in the exam, because DILR is not uh, a section, or it means not a category of questions which you get where you can directly know something and apply it direct means on the same day, or maybe in 2-3 days. Okay, you need to practice a lot, you have to understand the logic. Okay, if you are not doing that, then you won't be able to do it. Okay, so what I'll suggest is don't solve any question at all now, but you should keep your brain working in the right direction. That is, you should be doing something which helping you in getting becoming mean getting sharpened or remaining in the sharpened the pace. Okay, with respect to DILR, so I'll suggest you to solve puzzles. Okay, so solve some puzzles. Okay, easy level puzzles. Okay, something which you maybe find familiar. Okay, I'll say something like Sudoku. Okay, or something which you feel, okay, that, let's say, if you have seen TOI page. Okay, TOI, in TOI you get lot of puzzles. Okay, means every day, so you can solve those easy puzzles. That is something which will is sufficient to means keep your brain working but not stressing yourself. So that is something which I'll say for 29 November, means till 29 November, that is something which you need to do. Something extra if you want to do, then probably you can maybe means just revise uh, tables, fractions, and some calculation stuff. So that is something which extra you can do. So if you do the first part, you are means you are going into direction of the logical reasoning part. If you're doing the second part, you are making sure that you are means good with key calculation part. So that should be the plan till 29th of November. उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है. Okay, आराम means just relax raw, because everything which you have studied, okay, that is there in your mind. Okay, it's not gonna change. वो दो दिन में उड़ने नहीं वाला, evaporate नहीं होने वाला है. That will still be there when you go. Okay, if okay, so the again means जो fear रहता है, जो हम लोग को रहता है कि okay हम लोग और पढ़ के कुछ extra कर लेंगे, तो कुछ हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ के उखाड़ नहीं सकते. सो डोंट वरी अबाउट दोस थिंग्स. ओके, so that is the first thing which I say. Okay, so that is the plan for DILR for the next couple of days. Now what should you do for the exam day? Again, on the exam day, keep yourself calm. Okay, don't again think about the problems. Okay, don't think about the problems, okay, or questions. Just think about something which you already know. Okay, that is something which you need to tackle. Okay, so if your strength is DI, okay, so think about your strengths. Okay, think about your strengths.
and yeah, that should be your primary focus. Okay, so thing is, uh, if for any on any big day, if you want to do well, it is not your weakness which will give you the advantage, means which you need to overcome to get rid of the, means you excel in that particular exam. Let's say if you are a cricketer, means अपना weakness को overcome करके नहीं करने वाले तुम कुछ, only way you can win, only way you can perform your at best is by focusing on your strength. So focus on your strength. Okay, so think about your strength. That is the primary source of marks which you have in category. So that is something you should think. Okay, that okay, this type of question आ जाएगा तो मेरे से solve हो जाएगा, इस type का ये आएगा. So a lot of time what happens is people start thinking about कि क्या होगा exam में. Your mind runs in that direction. So if your mind runs in that direction, then think about only types of question which you can get, which you already know, and उस type का आ जाएगा. So that should be something which you should keep in mind. Okay. Now coming to the this thing, what should be DILR sectional plan in the exam? Now this is something which I wanted to discuss in detail, because that is something which I feel is very critical. Okay, because that can make or break the performance again. So one thing you should understand is, this is the keyword for DILR section, the selection. Okay, so that is something you should focus on. If your selection is good, okay, then you will be able to ace the exam. If you falter in that, then there is some problem. Okay, so always think about selection of questions which you know. The exam is not the time where you want to experiment. वहां पे जाके ये नहीं सोचना है कि ये वाला मेरे से बन जाएगा. Okay, always target the questions or types of sets which you have already solved. Okay, that should be the starting point. Okay, so selection is something which you need to focus on. Familiar sets. Okay, that is the target. Familiar sets, attack. When you see something familiar, I think that is where you should be looking at. Okay, because in DILR you need to select the sets. There are 8 sets. Out of 8 sets you need, in till last year, probably this year will be having 6 sets. So if you solve 3 sets, I'll say that will be more than means 9, means it will be close to 98 99 percentile. So that is the kind of score you will get if you solve 3 sets correctly. So familiar type of sets दिख रहा है तो आपको attack करना है. Okay, that is the way. Okay, here understand, in DILR section, beginning is very important. The first set which you're solving, that has to be easiest of the lot, or that has to be the set which you should be confident of solving. It means if you have little bit doubt, so starting में full confidence हो उसी को solve करना है. Start with full confidence. You see a set and you feeling okay, this is something which I solved before, I shall be able to solve this in the exam. वही solve करना. Start with something full confidence वाला set पे. Okay. You should not think about कि ये बन जाएगा. Don't think that cat वाला दिन तुम्हारा lucky day of the means lucky day होने वाला है. Okay, at least starting में. So starting में जो एकदम easy लग रहा है, जो लग रहा है कि बन जाएगा, जहां पे भी you start thinking कि बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, okay, that is something you should avoid. So that is the first advice I'll give you, that only start with the sets जिसपे तुमको लग रहा है 100% bet है ना, full confidence. So that is the key. Okay, so first चल अच्छे से हो गया. Then once you solve one set within 10 to 12 minutes, 10 to 15 minutes, you will have a lot of confidence that okay, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. Okay, so that should be the case. Okay, so starting should be that. Then next is अब इसके लिए selection के लिए what you should be thinking is okay, that overwhelming जब भी data लग रहा है, okay, then you should avoid. Okay, so a lot of time what happens is you see a set. Okay, let's say where you get set of that we call arrangements or ordering or sequencing. Also, that is also called multi-variable type of question, where you are given names, place, occupation, those type of set.
Now, some of you might be very good at solving those sets, okay, but in the exam, it may happen that you're reading the data and you're feeling, okay, ये bounce कर रहा है, ये लग रहा है बहुत too much information to process. Then I would say, even if that is something which your comfort zone, uh, avoid in the beginning, okay, means and probably in the exam avoid करना है उस वाले को, because जो भी ओवरवेलम कर रहा है तुमको डेटा वो काफी लंबा होने वाला है, एंड लंबा होने में जब भी मामला लंबा खिंचता है डीआईएलआर सेट में, the chances of making mistakes are higher because after certain duration means 7-8 minutes के बाद में you'll get anxious, okay कि अभी तक नहीं बना और थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, and then you are bound to make mistakes. So whenever you are seeing any type of question which has overwhelming data means लग रहा है कि bounce कर रहा है, I will say इस टाइप के सेट को अवॉइड करना है. No, no, not at all. Okay, so that is the first line of defense, okay, that is which you are supposed to do. Okay. uh, Second, okay, so that is the first type. Unfamiliar hai to obviously I'll say set unfamiliar as in you're reading the data and you're feeling okay, unfamiliar, but you are understanding everything, then you can solve. But that should be your second or third set, not the first. ओके, सो अनफेमिलियर वाले केस में थोड़ा सा भी अगर लग रहा है ओके मींस यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, सब कुछ समझ में आ रहा है क्योंकि इसमें टेबल बनने वाला है, इसमें चेस बोर्ड टाइप का क्वेश्चन है, मे बी यू आर गेटिंग क्वेश्चन इट्स कैरम बोर्ड समथिंग, ओके दैट दिस इज द something given, or some random kind of graph which you have never seen in life, but then you are looking at the data and you're feeling okay, I am getting hang of it, okay, and then I can understand कुछ calculation करना होगा profit loss का है, या फिर कुछ revenue sales वाला है, या फिर कुछ forward percentage calculation hai, or maybe data is changing something and you are getting total understanding what is happening, and then you are also getting क्या उसमें sequences बनने वाले हैं, तो that is something which you can solve. Otherwise avoid, okay, otherwise you should avoid, because unfamiliar में भी क्या होता है means a lot of time the logic which is required to solve the set, that is something which you already understand, okay, so that is something मेरे ख्याल से तुम कर सकते होगे. Now, so second and third set में okay. Now there is one thing, okay, how you are supposed to end, okay, let's say something which I think a lot of students has asked me that last में कुछ time बच गया, if I have 5 minutes what I am supposed to do, okay. So in that case, okay, you should look for set जहाँ पे 2+2 type का questions है. इसमें क्या होता है जनरली दैट यू हैव initial part given and then you have two questions and then you have additional information and two questions. So mostly इस type के question इस set में if you apply yourself 5 minutes में you may be able to solve first two questions, बाकी दोनों वाला नहीं होता, तो end में अगर if you have extra time, okay, end में you have 5 minutes, okay, 5 to 7 minutes, so then attempt set which has 2+2 है ना, 2+2 डाला क्वेश्चन होगा, तो दैट इज समथिंग विच यू आई थिंक यू कैन डू. ओके, नाउ that is something which I have the very important part. Okay, now something which is means which you want to avoid obviously in the exam, but then sometimes it happens that वो हो जाता है नो, कोई भी चाहता नहीं कि स्टक हो जाए सेट कैट में, बट कभी कभी स्टक हो जाते हैं, तो उसका फेल जो है हम लोग उसमें आईटी में भी बोलते हैं इसको, शायद आर्मी की भाषा में भी बोलते हैं, बहुत जगह इसको यूज करते हैं, फेल सेफ मैकेनिज्म. क्या, हाउ विल यू मेक श्योर दैट गलती हो गया तो उसमें आप कैसे रिकवर करोगे, किस तरह से उसको सॉल्व वो बाहर आ जाओगे, हैव दैट माइंडसेट, ओके, दिमाग में दैट after certain time, okay, means you are asking yourself, means when you're solving a set, उसके बाद में let's say तुमने पूरा डेटा पढ़ लिया, डेटा पढ़ने के बाद में तुम शायद है ना, means normally what happens is you are given a question where you have a story, then you have 5-6 sentences given. When you're reading the sentences, okay, you feel that this is an easy question, and then you're solving those sorry, story पढ़ने easy लग रहा है, then you're solving those 5-6 statements given and उसमें solve कर रहे हैं. Now, when you come to these 6-7 statements and you're writing, making notes, okay, ask yourself
after reading the question once. Okay, because generally when you're solving DILR or especially LR questions, okay, what happens is आप एक बार पढ़ने से पूरा काम नहीं होता, आपको दूसरी बार देखना ही पड़ता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है, क्या है. सो आस्क योरसेल्फ आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन वंस, आधा जितना भी नोट्स बना लिया है, मोस्ट प्रोबेबली दिस इज अराउंड, है ना, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन ये जो है इंस्टेंस 5 to 8 मिनट्स के बाद में आता है, जब आप एक बार पूरा गो थ्रू कर चुके हैं क्वेश्चन में आने से पहले ना. ये दिस इज ओके आफ्टर रीडिंग द इंफॉर्मेशन, ओके, नॉट क्वेश्चन, है ना, before questions. Now at this moment you ask yourself कि ये करना है या नहीं करना है. Should I go forward or now? If you feel अभी भी लग रहा है कि बहुत uncertainty है, क्वेश्चन करेंगे क्या है, then I'll say still you means उस समय भी आप you can leave and make sure that तुम mess में नहीं फंस रहे हो ना, तुम उस दलदल में नहीं फंस रहे हो जहां से तुम वापस आ नहीं सकते. सो जनरली ये 5 to 8 मिनट्स में होता है. ओके, तो आप उतना में निकल गए तो आपका 5 मिनट्स वेस्ट हुआ, आपका बस 12 मिनट वेस्ट नहीं हुआ है. एंड 10-12 मिनट्स वेस्ट होना 40 मिनट्स के क्वेश्चन में काफी ज्यादा हो सकता है. दैट इज द रीजन आई विल से कि बहुत जरूरी है एक फेल सेफ मैकेनिज्म. ओके, इतना करने के बाद में क्वेश्चन में आने के बाद में यू कैन सी कि क्या पे गड़बड़ा. तो यहाँ पे आस्क योरसेल्फ शुड आई गो फॉरवर्ड और नॉट, एंड देन टेक. ओके, अगर लग रहा है कि नहीं नहीं अब मेरे से हो गया यार, अभी बन गया है, वही क्वेश्चन देखना है, सॉल्व करने का है, देन ऑब्वियसली यू शुड गो मी सॉल्व. बट इफ यू आर फीलिंग उसकी इतना करने के बाद में कि बॉस अभी मेरे को और कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टाइप ऑफ सेट्स वेयर you are given information everything, okay, and then you solve something, and each question there is a means condition given. So these are the lengthy type of question. So probably you may have to means leave उस केस में ना, अगर लग रहा है कि okay not clear about the solution, then I'll say leave. Okay, so that should be the strategy. Okay, now I'll tell you, okay, this is something which happened with me in CAT 2008 when I was appearing for मेरा जिस तरह मेरा अहमदाबाद में हुआ था. So this happened with me in DILR set. Okay, I attempted first one, but I could not solve. I attempted second one, but I could not solve. And then there were three more sets, and I could solve all these other three. Now, means good thing which happened, means which I did during that test was, though both the sets I left within 5 minutes because I realized while solving कि okay नहीं बनने वाला, आज का दिन में ये नहीं चमकने वाला है. So first 10 minutes in that particular means when I was attempting this set, कुछ भी नहीं बना, but then means there were 5 sets, बाकी 3 में से बन गए, तो वो मेरा means सारा स्कोर वगैरह अच्छे से आ गया. So अगर मैंने वो फेल सेफ मैकेनिज्म में नहीं रखा होता तो मेरा ऑब्वियसली पेपर नहीं बनता. तो that is something which you need to have in place. Okay, so that should be the strategy, I guess. Okay, इतना ध्यान रखना है. And again the key line which I'll say again is सबके लिए important है. You should focus on the selection. If your selection is perfect, okay, that is what makes a break, जो है अपना तुम्हारा DILR में make or break करेगा तुम्हारा परफॉर्मेंस को. So just focus on selection. Select बिगिनिंग फर्स्ट टू सेट्स. फर्स्ट सेट तो एकदम सबसे इजी वाला जो तुमको लग रहा है वही होना चाहिए. ओके, चाहे उसके लिए तुमको 3-4 मिनट लग जाए. ओके, इवन ओके, तो सिलेक्शन में आपको 3-4 मिनट लग जाएगा तब भी चलेगा, बट सिलेक्शन जो पहला वाला बहुत सही होना चाहिए, बिकॉज दैट इज हाउ यू कैन मेक श्योर दैट you have started well. And once you have started well, then obviously things will move in the right direction. Now there are some questions. Okay, uh, so there's a question from someone that प्रीवियस ईयर रिपीट होने का चांस होता है क्या? ओके, प्रीवियस ईयर एग्जैक्टली रिपीट नहीं करता है, बट every year what I've seen over the last 3 years, okay, when papers are released, हर साल एक दो सेट मेरे को ऐसा लगता है जिसमें काफी सिमिलर है which was asked before. So every year means, so there was a question which was in 2017, funky pizzeria वाला question था, and then in 2000 I think 18 there was a question on set theory which has almost identical data, as in means graph बना रहे total 30 means जो means statements are even same. Okay, 17 was the number. Okay,
and it was given that people participate in at least one set, one at least two sets is 10. So that is how you could solve that particular question. So data भी same देखा हुआ है मैंने. So uh, thing is, so that happens. So एक या दो सेट में होता है, ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे सेट्स होंगे, बट कैलकुलेशन वाइज हो सकता है कि कुछ हो सकता है. Okay. So that is how you are supposed to do. Okay, so I mean, so ऐसे करेंगे तो आपको कभी कुछ दिक्कत नहीं होएगा कि so प्रीवियस ईयर वाले को आपने पढ़ा हुआ है तो उसको याद रखना है. अभी के लिए आई वुड से इवन इफ यू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको रिवाइज कर सकते हो, बट ये नहीं करना है कि मेरे को नया से क्वेश्चन बनाना है. नया क्वेश्चन बनाने को याद कर लोगे, बट वो मीन्स something, if you are not able to solve in first attempt right now, you won't be able to solve that in first attempt in the means in the exam itself. So that is something which you need to do. Okay. Hello Ojashvi, thank you very much for dropping here. Ojashvi is means our student, okay, ex-student. Uh, आकाश इज आस्क्ड सेट थ्योरी का सेट अगर रहे तो उसको लास्ट में चूज करना है या पहले. नाउ which what I have seen over the last 3 years is uh, 4 times set theory questions were asked in DILR. Now out of these 4 times, 2 times sets were difficult. Means as in difficult as in it could take at least 15 minutes to solve such case. Means lag sakta hai. Okay. Even if you are very good at set theory, reason being there were some conditions given, there were some which means you the it was not solvable set, everything was condition driven. Okay, जहाँ पे complete solution नहीं आ रहा है उस type का set था. So उस type के question में obviously you probably need not solve that kind of question, but out of those 4 times, 2 times it was pretty easy. This is last year in I think slot one the means जो था you had to make three set वाले pie charts, okay, and then you could solve it easily. So उस टाइप का आएगा तो then I think that is something which is wonderful. इतना easy मिल जाएगा तो एकदम अटैक करो उसको सॉल्व कर लो. बट अगर लग रहा है कॉम्प्लेक्सिटी, सो आई से टॉपिक पे नहीं जाना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन में जाना चाहिए. इफ यू रीडिंग इट एंड यू आर फीलिंग दैट इट इज समथिंग व्हिच is something you are not familiar with or something लग रहा है तुम्हारा लॉजिक नहीं अप्लाई हो रहा है, तो फिर छोड़ देना ही अच्छी वो एक करेक्ट सॉल्यूशन होगा. So that is something which you should keep in mind. A lot of people have means confidence in LR or let's say confidence in DI. Okay, so I would say हार्ड एंड फास्ट नहीं रहना है. कैट में क्या हो सकता है कि आपका वो जो जिस टाइप का क्वेश्चन है ना लग रहा है आपको कि अच्छा लग रहा है, हो सकता है आपका फेवरेट टॉपिक का क्वेश्चन उस दिन काफी डिफिकल्ट हो, जो आप तो उस केस में दिक्कत हो सकता है. जैसे वन क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन लास्ट टाइम दैट आई थिंक कि कुछ सम राउंड्स आर देयर, ओके, जहाँ पे कुछ लोग 10 राउंड्स आर देयर, ओके, देयर आर सम 10 पार्टिसिपेंट्स वर देयर. उस टाइप के क्वेश्चन में यू आर टॉकिंग अबाउट 10 into 10 100 डेटा पॉइंट्स. सो उस टाइप का क्वेश्चन यू कैन अवॉइड इजीली. But sometime when you get question जहाँ पे लग easy रहा है and then you are going into it and it's getting difficult, so I'll say वहाँ पे आपको घुस के ही पता लगेगा. When you're reading it after 2-3 minutes only you can understand whether that's a difficult set or easy set. So वो 1-2 मिनट लगेगा रीड करते करते हुए. जैसे your mind is giving a signal that oh boss this is going overhead, then obviously I think that is something which you should avoid at any cost. Shrishti has asked, should we spend 3-4 minutes initially for set selection? I'll say yes. Okay. पहला set select करने के लिए maximum 3-4 minutes में you could find one set जो तुम्हारा stronger area है. So I'm sure obviously एग्जाम में एक आध सेट तो मिल ही जाएगा जो तुम्हारा स्ट्रॉन्गर सूट है. उस टाइप का सेट आराम से ढूंढ लो किस टाइप का है. ओके, इट कैन बी ग्राफ वेयर यू आर कंफर्टेबल, इट कैन बी मे बी ऑर्डरिंग टाइप का क्वेश्चन वेयर यू सी इंफॉर्मेशन लिमिटेड, मल्टी वेरिएबल टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे मे बी वेरिएबल्स 3 है. इफ यू फाइंड दैट काइंड ऑफ अ सेट, ओके, देन आई विल से देयर इज नथिंग लाइक इट. One thing which I can vouch for is wherever you have information given and a lot of statements, means statements are means 8, 9, 10 statements hai, most of the cases those questions are tricky, as in tricky in the sense even if those questions are not tricky, what happens is उतना length से
आपका जो है दिमाग वो हो जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा, एंड देन प्रॉब्ली यू आर you means you may make mistake उस टाइप के क्वेश्चन में। तो आई विल सजेस्ट जहाँ पे लंबा-लंबा क्वेश्चन है उनको आप थोड़ा देख सकते हैं, मीन्स देयर इज समथिंग आई से यू शुड हैव कॉशन बिफोर अटेम्प्टिंग दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो वो इस टाइप के क्वेश्चन करना है जहाँ पे इजी लग रहा है। जो छोटा-छोटा क्वेश्चन भी जरूरी नहीं कि इजी हो, बट लंबा-लंबा क्वेश्चन तो ऑब्वियसली मेक यू कैन बी श्योर दैट जनरली लैंग्वेज इज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मीन्स कैट में डीआईएलआर में ऐसा नहीं होता, यू गेट very simple language ekdam, okay, you get a bit complex type of sentences which takes time in understanding। So तो उस टाइप में आपको वैसे भी टाइम ज्यादा लगने वाला है, तो उन सबको आप अवॉइड कर सकते हैं। okay, तो ये चीज ध्यान रखना है। okay. एनीवन एनी अदर क्वेश्चन विच यू हैव रिलेटेड टू डीआईएलआर एग्जाम डे में प्रिपरेशन से पहले क्या करना है? Anyone? Then I'll answer those questions. Okay. Otherwise, we'll close the session. Now, before we go, okay, I'll wait for a minute till I want to say something extra. Okay. So, exam में as I've told yesterday about QA section also, DILR में again you need to tell yourself you want to select the easy one first. Okay, so selection is the most important means aspect of solving DILR, scoring well in DILR. So what I'll suggest is again VA section जैसे ही खत्म हुआ है 10 seconds का break लो, mentally सोचो what I want to do, maybe close your eyes, just think what I want to do in this particular means next 40 minutes, and then think about it in 10 seconds and then go with it. So that is what you can do. Okay, so ये होना चाहिए। ओके जनरली ओके ज्योति ने पूछा क्वेश्चंस विल रिपीट जनरली, एज आई टोल्ड यू क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, सम पार्ट ऑफ इट may get repeated। okay, in terms of the मीन्स क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा है, थोड़ा थोड़ा डेटा भी रिपीट होता है, बट एग्जैक्टली यू वोंट गेट क्वेश्चंस आर एग्जैक्टली क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, कभी भी रिपीट नहीं होता। दैट इज समथिंग व्हिच आई हैव नेवर सीन, बट व्हाट आई एम सेइंग इज लॉजिक, सम नंबर्स ओके इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस उस टाइप का रिपीटेशन होता है। Okay, AB is asking, hello sir, can we expect any 5 question wala set? Now that is something which obviously I can't be sure about। Okay, I can't means make comment, reason being कैट वालों ने यार ये बताया नहीं सिलेबस में सबने कि क्या होगा स्ट्रक्चर। ओके सो obviously can't say। okay, I'll I believe that they won't change the pattern much, reason being otherwise that will be a huge disadvantage to people who are writing tests in the first slot। okay, so I think 4 question वाला ही रहना चाहिए, but again I can be wrong। so you can just means एक्सपेक्ट कि 4 होना चाहिए, बट देन यू कैन हैव द माइंड ओपन दैट 5 वाला भी आ सकता है। ओके नाउ इफ यू आर इन द सेकंड और थर्ड स्लॉट, ऑब्वियसली आई विल वांट यू गाइस टू नो कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो दैट यू कैन अकॉर्डिंगली प्लान। ऑल्सो आस्क अबाउट द ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑफ दीज DILR section, because if you know that overall difficulty level क्या है, means is it difficult or at the same level as 2017, 18, 19, then you go with the same mindset। but if let's say questions thoda easy aa raha hai, then you can have a different mindset। or also one more thing which you can ask your friends। okay, that क्या बाइफर्केशन है, डीआई कैसा आ रहा है, एलआर कैसा आ रहा है। ओके क्वेश्चन में नहीं जाना कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ये कि डीआई एलआर वाला इजी मींस डीआई में डीआई के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, डीआई में स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके तो चलेगा, मतलब यानी यू नीड नॉट गो इनटू डिटेल कि ओके ऐसा क्वेश्चन आया था मेरे को बता दीजिए। क्वेश्चन का ग्रैन्युलरिटी में जाने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल देखो कि क्या किस तरफ से क्वेश्चन आने वाले हैं। so that is something which you can ask at just after first slot। okay, which will be over by 10:30। so I think okay, so we'll immediately will try to get we will means within half an hour we'll release one video where we'll talk about what is the difficulty level and what was the overall means what each section QA में क्या हुआ, DI में क्या हुआ, LR में क्या हुआ। so after slot 1, slot 2, slot 3 we'll have uh, means we will have reviews, okay, and analysis videos done, and at the end of the day, okay, around 7:30 we'll have a huge means full detailing of all the slots, what will be the total
overall expected cutoffs and everything, that will be released. uh, CAF has, okay, so Akash has asked आपका prediction सर इस साल के लिए. I think हो सकता है DILR थोड़ा सा इजी हो, बट नॉट, मीन्स थोड़ा सा इजी हो, बट बहुत ज्यादा नहीं. एंड आई थिंक नंबर ऑफ सेट शुड बी 6. ओके, 5 to 6 के अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं है, so 6 होना चाहिए. ओके, सो दैट यू हैव इनफ चॉइसेस अवेलेबल. कैफ इज अभी प्रीवियस ईयर सॉल्व करे या मॉक वाला फॉर LRDA. आई से कैफ आइडियली तो कुछ सॉल्व नहीं करना चाहिए. अगर इफ यू आर मींस थिंकिंग ऑफ सॉल्विंग सम क्वेश्चन, दोज शुड बी क्वेश्चन जो आपने पहले सॉल्व किए हुए हैं एंड यू आर कंफर्टेबल विद. पहले सॉल्व किए हुए और स्पेशली मींस तुमको सॉल्यूशन समझ में नहीं आया या फिर तुमको लग रहा है कि बाउंस कर गया, तो उसको रिवाइज करने का कोई जरूरत नहीं है. बिकॉज एनीवेज यू वोंट बी एबल टू, मींस अगर पहले समझ में नहीं आया तो अभी फिर से समझ में आएगा नहीं, और फालतू में दिमाग खराब करने से फायदा नहीं है. सो यू शुड बी focusing more on your mental being, okay, that you are in best state of mind to write the exam, rather than thinking about कि okay मेरे को और क्वेश्चन करने से कुछ फायदा होगा. Okay, so that is more important. Shrishti, okay, first slot के लिए what I'll give you is uh, go with means just थिंक अबाउट इट एज कि जो नॉर्मली होने वाला वैसे ही होगा एग्जाम लास्ट ईयर से. थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, बट इन केस यू सी समथिंग डिफरेंट, ओके, यू शुड हैव द ओपन माइंड कि हो भी सकता है वैसा. तो दैट इज द एडवाइस आई विल गिव यू कि मींस एक्सपेक्ट कि क्वेश्चंस होंगे अराउंड 20 to 25 के बीच में होना चाहिए हर एक सेक्शन में. DILR में भी अराउंड 5 to 6 सेट्स आना चाहिए, एंड उसको इस तरह से ट्रीट करना है, सॉल्व करना है. द फंडा ऑफ सॉल्विंग रिमेन द सेम, दैट यू हैव टू select questions well. CAT can be speed based exam, easy paper. I think ऐसा नहीं करना चाहिए, especially that will be a huge disadvantage to people who are in this first lot. So I assume that the paper will have same kind of pattern which was in CAT 2019. That is what my expectations are. इजी बहुत ज्यादा आना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, बहुत ऐसा नहीं करना चाहिए कि बहुत ही इजी कर देगा. DILR आई विल से बहुत इजी करेगा भी नहीं. ओनली आई हैव सीन बीच के पीरियड में कुछ DILR इजी हुआ था, एज इन 2000 मींस अराउंड 10 to 13 वाले पीरियड में. बट उसके बाद से उसके पहले भी DILR हैज बीन अ सेट व्हिच इज नॉट इजी टू क्रैक. ओके, मतलब डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन आते थे, तो वो तो हमेशा ही सही रहा है. ओके, आई थिंक अक्रॉस स्लॉट क्वेश्चन चेंज नहीं होएगा. ओके, मींस अदरवाइज दे वोंट बी एबल टू डू नॉर्मलाइजेशन अक्रॉस स्लॉट्स. उनको निकालना तो ओवरऑल परसेंटाइल अलग सबके एक साथ में ही है ना, तो अगर वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही अलग अलग कर देंगे तो फिर हो गया उनका, नॉर्मलाइजेशन वोंट वर्क. सो दैट इज समथिंग व्हिच आई फील मींस व्हिच आई बिलीव कि ऐसा नहीं होना चाहिए. तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस across slot will remain the same. So if you are in the first slot, I'll say assume करो 5 से 6 सेट आने वाले, आपको फोकस स्टिल सिलेक्शन पे करना है, एंड सेलेक्ट करना जो इजी वाले लग रहे हैं. जो एकदम ओवरवेलमिंग लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, उसको टच भी नहीं करने का है. ओके, एंड इनिशियल द स्टार्ट शुड बी ग्रेट. वंस यू स्टार्ट वेल, देन आई थिंक थिंग्स बिकम्स वेरी इजी. ओके, मींस अगर आपने शुरू के 15 मिनट में एक सेट सॉल्व कर लिया है, ओके, 10 to 15 मिनट्स के बीच में, देन chances are there you can solve 3-4 sets, now maybe 5, depending on how means how the level of speed you have. Okay, but if you are not able to solve means अगर 10 शुरू के 15 मिनट में नहीं हुआ है, तो फिर पैनिक स्टार्ट कर जाता है, क्रीप इन करना, विच इज समथिंग आई वुड से नहीं करना चाहिए. मतलब उसको अवॉइड करने के लिए जैसा भी हो सकते हम लोग कर सकते हैं. सो उसको टोटली अवॉइड करना है. अभी के लिए हम लोग को जस्ट फोकस करना है कि हम लोग सेलेक्ट अच्छे से करें. तो DILR के लिए the last tip which I want to give you guys is your means focus should be when you're writing the exam selection. Select well, select the first one well, and then things will go in the flow and you will be able to crack the exam and you will get really good score in this section. So that is all from my side. All the best for DILR section. Thank you. Good night.